Video we will learn about describing words under this chapter. Wake up from class 4th NCERT Marigold, and I am Mrs. Nutan Singh from Kendriya Vidyalaya Kota. Students, what we learn with pleasure we never forget. So let's start learning with smiling. Let's begin. Today's topic is adjectives, and today we are going to talk about adjectives. Children, what is an adjective? Adjectives क्या होते हैं? Adjectives describes a noun. An adjective is a word that describe a noun, and a noun is a person, place or thing. यानी जो नाउन की विशेषता बताएं ऐसे शब्दों को हम कहते हैं एडजेक्टिव्स. Let us learn in detail. Here you can see 3 images: a lady or a girl, a building and a bear. And can you imagine few words for these pictures? A tall lady, a big building, a soft toy, and so many more words you can use for these images. So the lady is tall. It means tall is a word here which describes this lady. And big building means this building is big. So big is the adjective for this building. And a soft toy, the toy is very soft, so soft is the describing word for this toy. Okay children, it means adjectives tells detail about nouns. Let us explore more. An elephant, a big elephant. ये हाथी कैसा है? बिग है, यानी बड़ा है. तो एलिफेंट की विशेषता क्या हो गई कि वो बड़ा है. ओके, सो द बिग इज द एडजेक्टिव वर्ड हियर. ओके चिल्ड्रन, लेट अस एक्सप्लोर मोर. टाइनी एंट. चींटी कैसी है? टाइनी है. तो यहाँ पर टाइनी वर्ड is the adjective. Okay, three chocolates. How many chocolates? 3 chocolates. It means कि ये numbers को भी represent करता है. कितने chocolate हैं? 3 chocolates. Here 3 word is the describing word for chocolates. Okay, next, a round table. It means डिस्क्राइबिंग वर्ड्स शेप भी बताते हैं कि वो किस तरह का दिखता है. ठीक है बच्चों. ओके, अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई. कैन यू से द कलर ऑफ दिस बटरफ्लाई? दिस इज अ ब्लू. ओके, अ ब्लू बटरफ्लाई. सो हियर द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर दिस बटरफ्लाई इज ब्लू. ओके, okay, I know you are very much familiar of this cartoon character. This is a bird. Not the bird only, it's an angry bird. Here an adjective is used for this word, and that is angry. वो कैसा है? वो गुस्से में है. तो angry यहाँ पर होगा describing word for this bird. Move on. It means adjectives feelings को भी बताते हैं, नंबर्स को बताते हैं, शेप को बताते हैं और फीलिंग्स को भी बताते हैं. ठीक है. नाउ वी कंक्लूड दैट दे टेल अस अबाउट. दे मीन्स एडजेक्टिव्स टेल अस अबाउट द कलर, द साइज, द नंबर, द शेप and the feelings of noun.
यानी किसी भी इंसान, जगह, वस्तु के कलर, साइज़, उसका नंबर क्या है, उसका शेप कैसा है, उसकी फीलिंग कैसी है, ये सब हमें बताते हैं एडजेक्टिव्स। यानी जो उसके लिए यूज़ हो रहे हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, वो होते हैं एडजेक्टिव्स। एंड दिस इज collage for you children. I hope you like it. Finally, we can say that adjectives always answer the question what kind, which one, how many, how much. यानी कोई भी चीज़ किस तरह की है, कैसा है, कितना है, कैसा दिखता है, ये सब हमें बताता है एडजेक्टिव्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। Finally, we can say that adjectives tell us about the nouns. And here a question for you children. The dash bees flew around the dash flowers. You have to fill it by suitable describing words. Let us imagine. Yes, the happy bees, the tiny bees. You can use it for this. Flew around the pretty flowers, beautiful flowers. It means happy is a describing word used for bees. We can use for these bees, and pretty word we can use for flowers. These two words are adjectives. Okay. Now another one. Find the adjective in the given sentence. The little girl is sad because she lost her new beautiful doll. यहाँ पर ये गर्ल सैड है क्योंकि वो अपनी गुड़िया को खो चुकी है। तो इस सेंटेंस में यू हैव टू फाइंड व्हाट आर द एडजेक्टिव्स यूज्ड। yes. The little girl is sad because she lost her beautiful doll. Here you can see the colored words used: little, sad, beautiful and doll. Why this is in colored form? Because these are adjectives used for girl and the doll. So adjective for this girl is little, sad, and adjectives for this doll is new and beautiful. यानी लड़की छोटी है और दुखी है, ये लड़की की विशेषता पता चल रही है। और ये डॉल कैसी है? नई है और खूबसूरत है। तो ये सारे वर्ड्स हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। आई होप यू वुड लाइक इट। Wake up poem. Okay, let's come to our poem. Wake up, wake up. It's a lovely day. Okay, children, what type of day it is? It is a lovely day. So the word lovely is a describing word for this line. Okay. And in the second stanza, you can see a sleepy head. ये बच्चा नींद में है, तो ये sleepy है। तो हम कह सकते हैं कि sleepy is the describing word for this boy. Okay, now comes to third stanza of this poem. Wash and dress and come on out, everyone is up and about, the cow, the horses, the ducks and the sheep, the tiniest chicken. Chicken कैसा है? Chicken is tiny. Okay, and at last here is a worksheet for you. And I hope कि आप इसे easily कर लोगे अभी। ठीक है, you have to match these pictures with these words, adjectives: candies, drum, whale, bricks, popcorn, pillow, and a knife is given here. Okay, and this is all about. Thank you so much. Children, remember one thing: yesterday is gone, tomorrow has not yet come. We have only today. Let us begin and learn with fun. I am Mrs. Nutan Singh from Kendriya Vidyalaya number 1, Kota. I hope you have enjoyed the rhyme, recitation and the exercises of this chapter. Thank you so much.